Can I have some highs and hellos in the chat section, please? Can I have some? Good evening, Jewel Maria. Okay, your name is Maria, but Jewel, you're really a Jewel. Good evening. Maria, you can call me Isha, okay? Hello, hi, good evening. Good evening, everyone. Hi, hello. Hi, hello. Okay, so members, this is your first Q&A session if I'm not wrong. Hey, hi, everyone. Yes, members, I asked you something. This is your first Q&A session with Edna? Yes, okay, great. So, let me tell you all something about the Q&A session. This session is specially designed for you all. You know, here we'll answer all your questions. Yes, Ritu, we are meeting again. You know, here we'll answer all your questions, all your doubts. जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं मन में, for a smooth flow, अभी आप लोग खुद को अनम्यूट नहीं कर पाओगे, so आप लोग चैट सेक्शन में लिखो. लेकिन अगर आपका डाउट रियली बहुत लंबा है तो आप अपना हैंड भी रेज कर सकते हो. हैंड रेज से याद आया, I can only see Sumanthi. Where are other members today? Why I cannot see anyone? Can I have some cameras on? Otherwise, I'm not going to start today. I'm waiting for you all to switch on your cameras really quickly so that I can start with the session. Okay, Riddhi and Kavita, Rajeshwari. Okay, I want more cameras on. Ritu. ओके अच्छा ठीक है, अभी मुझे और कैमराज ऑन दिख रहे हैं. तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जल्दी से सेशन स्टार्ट कर दूं तो आप कैमरा ऑन कर लो. अदरवाइज मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी बैठूंगी आराम से. बिकॉज जस्ट इमेजिन इफ वी स्टार्ट with our cameras off, आप लोगों को कैसा लगेगा? हमें भी वैसे ही लगता है. इसलिए we want you all to switch on your cameras. No matter what you're doing, आप सो रहे हो, खा रहे हो, बाहर हो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता. मेरे को आपका कैमरा ऑन चाहिए, मुझे आपको दिखना है. नो वरीज स्टोरी, आप ऑफिस पे हो, कोई बात नहीं. बाकी सब तो नहीं है ना? आई एम नॉट वेल. वायरल फीवर, मारिया, यू नो व्हाट, आई एम आल्सो हैविंग फीवर, बट मेरे चेहरे से नहीं दिख रहा होगा. I'm having it. My eyes are little swollen. जिन्होंने मुझे पहले देखा है, maybe you must be seeing थोड़ा सा swollen है मेरा eyes as today. Oh, no problem at all. So, cameras अभी मुझे और भी on दिख रहे हैं. And today, as I told you, this is your first Q&A session. And इससे पहले आपका कौन सा session हुआ था? Can anyone tell me? ये वाले session से पहले आपका कौन सा session हुआ था? Makeup theory. Yes, exactly. So ये Q&A हमने स्पेशली इसी रीजन से डिजाइन करी है कि आपकी जो थ्योरी वाली सेशन हुई थी इससे पहले, उसमें अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है, कोई भी क्वेश्चन है थ्योरी रिलेटेड, तो आप पहले वो पूछोगे. स्टार्टिंग के कुछ टाइम पे हम लोग थ्योरी का सेशन कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बाकी के क्वेश्चन लेना चालू करेंगे. ठीक है? सो जिनको भी थ्योरी क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि थ्योरी इज समथिंग, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है? अगर आपको थ्योरी पता होगी ना, तभी आप भीड़ से अलग खड़ा हो सकते हो. ठीक है? If you know the theory, you're standing out of the crowd. Just remember that. Okay? So theory, if you have any doubts, any questions, feel free to ask. First, we'll cover all the theory related questions and then we'll start with other questions. Okay? And you all won't be able to unmute yourself. Q&A मतलब शिवानी मैं बता रही हूँ कि question and answer. ठीक है? इस सेशन में हमारे एक्सपर्ट कोई लुक नहीं करेंगे, हम कोई मेकअप नहीं करेंगे. यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस पूछेंगे. ठीक है? एंड ऐसे आपके 3 सेशन होंगे जिसमें आप सिर्फ क्वेश्चन पूछोगे, क्योंकि बाकी के सेशन में आप एक्सपर्ट के साथ प्रैक्टिस करते हो एंड आप क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हो. इसलिए हम आपके लिए ये रखते हैं Q&A सेशन जिसमें आप अपना क्वेश्चंस पूछ पाओ. ओके? क्योंकि आप लोग अनम्यूट नहीं कर सकते हो खुद को, सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना क्वेश्चन टाइप डाउन करोगे चैट सेक्शन में. लेकिन आपका क्वेश्चन अगर बहुत लंबा है, आप कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो आप अपना हैंड रेज करो, मैं आपको अनम्यूट करूंगी. you all won't be able to unmute yourself. So if you have a very short question, you can type it down in the chat section, or if you have a very long and a confusing question, you can definitely raise your hand and I'll unmute you for a smooth flow of the session. Okay? So anyone can tell me who is our expert for today?
Can anyone help me with that? तो बता सकते हैं मुझे कौन है हमारी आज की एक्सपर्ट? Aisha ma'am. Yes, Aisha is our expert for today. And let me introduce Aisha to you all. Aisha Mukherjee is a passionate and professional makeup artist based out of Mumbai, being a former retail manager at MAC Cosmetics for over 5 years. Yes, thank you so much, Shivani. Uh, she strongly believes in perfection, customer satisfaction, punctuality, and hygiene. She holds a total of 10 plus years of experience in the makeup industry. Her areas of interest have always been training and sharing her expertise gained over so many years with all the aspiring makeup artists and guide them in the right direction to succeed in this industry. And let me tell you a very, very, very good and heartful news that Aisha has recently launched her makeup salon with the name Generously Glammed, which is also her Instagram ID name. And we are so happy, so happy. I just can't explain. And Aisha, from recent days, she has been, hosting every session in her salon. And that's so nice of her. Let's spotlight Aisha and उनका हम salon का background भी देख लेते हैं. Hi Aisha, आप म्यूट पे हो. No problem. Hello, thank you, Isha. Thank you so much. It really means a lot. And thank you, members, for all your love. Thanks for a lovely introduction. Despite not being well, I really wish you could have taken rest today and taken care of yourself. But thank you very much for still making up for. Yeah, I just am hosting this because I feel good when I come here. I feel a very good vibe here, and मेरे को पता है अपने body से heat आ रही है. मेरे को feel हो रहा है कि मेरी body कर रही है अभी, लेकिन फिर भी I am so happy that members के लिए I can do anything. So sweet. Thank you so much. And so lovely comments for you in the chat section. Ma'am, you look changed. You look cute. New hairstyle. Yes, it's a new hairstyle. So when you have your own salon, you just can't stay calm, something or the other every single day. But thank you for noticing the change. And how are you all doing, guys? How is it going at Air Black and your fresh new batch? So आप लोगों को कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है सीखकर? कुछ डाउट्स जो भी है आज हम वो डाउट्स क्लियर करेंगे. जो भी क्वेश्चंस आपके थ्योरी रिलेटेड है. ओके हेमा, थैंक यू. Looking like honestly, you look like a cute little, छोटा सा baby. Okay, thank you. All right. So yes, tell me, guys, what all questions आप लोगों ने कोई questions अपने mind में रखे हैं? जब भी आपने पहली बात तो आप सबने वो lecture attend किया है? Has everyone attended your previous session of theory of makeup? And if not, then did you guys go through the recordings? Okay. Chalo. Many of them say yes. Hello, Mafia Ansari. Lovely. Which means that y'all pretty much know at least basics of theory of makeup. Or during the session, if y'all were unable to ask, or maybe your questions were not answered due to time constraint, this is the session where we, you all can. Translation का क्या काम होता है? Okay, Kajal, I will answer this question since अभी तक कोई और question आया नहीं है. But initially we will stick to theory of makeup related questions. अगर आप लोगों को पूरा theory of makeup समझ गया है and you all don't have any questions further, मतलब सारे questions हम clear कर लेंगे क्योंकि it's a nice 1.5 hour long session. So we will get enough time. Maybe you all will come to a point जब आपके पास questions ही नहीं बचेंगे.
So आज आपके किसी के भी questions खाली नहीं जाने वाले हैं. So I will answer your question, but let's focus more on the theory of makeup, and then after we are all clear with that concept, then we can start taking any makeup related questions or doubts or challenges that you all have. I will be more than happy to answer them. So translucent powder का क्या काम होता है? ट्रांसलूसेंट पाउडर का काम ये होता है कि आपके फाउंडेशन को वो लॉक करता है, ठीक है. ट्रांसलूसेंट पाउडर डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, लाइक ट्रांसलूसेंट पाउडर कौन से फॉर्म में आते हैं? कॉम्पैक्ट और लूज. सो इवन लूज पाउडर्स आर yes, so even loose powders are translucent and compact powders are translucent. Translucent powder का simple मतलब यही होता है कि it is not opaque, it is not transparent, it is in between, which means it's not very heavy and very heavy in color, very heavy in coverage, and it is not very transparent, मतलब बिल्कुल भी कलर ना हो, जैसे white powders होते हैं. आप लोग के किट में वो रेवोल्यूशन का एक से bottle kind of a powder आया होगा. So that is a transparent powder because it doesn't have any skin color in it. So that's transparent. And Studio Fix powder जो होता है MAC का, वो एकदम heavy powder होता है जिससे आपको अच्छा coverage मिलता है, जो मैंने आज लगाया. It almost looks like a foundation in a powder form. इन दोनों के बीच का is translucent, which we usually use for locking our foundation, and that comes in compact and loose form both. And that also comes in different tones, मतलब shades के हिसाब से आते हैं वो. Okay, next question is asked by Dhanya. Blank face chart. Blank face chart मैं ना गायब. हाँ, blank face chart ये होते हैं जो आप उनको खरीद भी सकते हो Amazon से. You can also find them on Google. Just type blank face chart and see images वाले सेक्शन में जाके आपको ब्लैंक फेस चार्ट्स के पिक्चर्स आएंगे. वो आप यूज कर सकते हो एज अ टूल to create your makeup looks and do your creativity. जिनको face charts बनाने में interest है, हम लोगों ने theory of makeup में face chart भी किया होगा, right? तो उसी का blank face chart is basically anything which is not उसमें कोई makeup नहीं किया हुआ है, कोई product नहीं लगा हुआ है, और वो ऐसा tool होता है जो आप use करते हो to fill it. When it's blank, it is ready to fill with makeup so that you can showcase your talent and skills and artistry on that. Couple of them are confused about the skin tone. Like कैसे पता करे कौन सा skin tone होता है, तो आप explain कर दो. Okay, so skin tones कौन से form में आते हैं, कौन से tones होते हैं? एक tone होता है warm, एक tone होता है cool, और एक tone होता है दोनों का in between, which is neutral. Neutral is जिसमें थोड़ा बहुत warm और cool दोनों mix हो, वो neutral होता है. How do you understand what is your cool undertone? Cool undertone is more pinkish look जो होता है, जिनके भी आपको skin में वो एक pinkiness दिखता है, थोड़ा peachy effect दिखता है skin के undertone में. Undertone आप कैसे, undertone pink, peach ऐसे होता है. Tones जो हमारा कलर होता है, ऊपर का कलर, उसको टोन्स बोलते हैं. और अंडरटोन होता है जो ऊपर के कलर में एक हल्का सा पिंकी टोन होता है, हल्का सा येलो या हल्का सा ऑलिव टोन होता है. तो ये सारे टोन्स आप कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसका सबसे ईजीएस्ट फॉर्म इज दैट व्हेन यू सी एनीथिंग व्हिच इज मोर ऑलिव और ग्रीन, दैट इज वार्मर अंडरटोन, ठीक है. एनीथिंग व्हिच इज ब्लू पिगमेंट, आप आपके नर्व्स से जज कर सकते हो. इफ यू सी नर्व्स, कईयों के ऐसे भी पैरों पे नर्व्स दिखते हैं, या फिर यहाँ पे नर्व्स दिखते हैं. तो व्हेन यू चेक एनीथिंग व्हिच इज मोर ब्लू, वायलेट, दे आर ऑल कूल. ब्लू इज वाटर, हमेशा याद रखो, ब्लू इज वाटर, वाटर इज कूल. And
anything which is green is warm. अब आप ग्रीन को वार्म कैसे, आप येलो अंडरटोन पकड़ लो, येलो गोल्डन, येलो एंड गोल्डन इज सन का कलर समझ लो, तो सन इज वार्म क्योंकि सन गर्म होता है। मतलब इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो अगर आप भूल जाओ बाद में कभी तो, ठीक है। सो आई यूजुअली कि मैंने जब स्टार्ट किया था अपना मेकअप जर्नी या मेकअप क्लास और कोर्स, तो दिस इज हाउ आई यूज्ड टू connect anything which is yellow or golden. It signifies sun for me, and sun is hot, so it is more warm undertone. And anything which shows blue or violet color of your nerves, that is related to water. Blue means मुझे water की याद आती है, blue sea, and sea is always calming, so it is cool undertone. अब blue और violet tones जो होते हैं, undertones जो होते हैं, वो usually pinkish और peachish skin tone के ऊपर होते हैं, ठीक है। एंड येलो एंड गोल्डन एंड ऑलिव जो स्किन टोन्स होते हैं, उनके नर्व्स होते हैं ग्रीन, ऑलिव, इस तरीके के नर्व्स होते हैं, ठीक है। एंड एनीवन हु हैज मिक्स्ड नर्व्स, लाइक कहीं पे वार्म है, कहीं पे कूल है, विच मीन्स कहीं पे ब्लू है, कहीं पे ऑलिव है, कहीं पे ऐसे ब्लू ग्रीन ऑलिव का मिक्सचर है, वो यूजुअली आप फेस भी देखोगे ना किसी का, तो आपको समझेगा कि दिस इज नॉट वेरी येलो एंड दिस इज नॉट वेरी पिंक, सो व्हाट इज इट इज इन बिटवीन, दैट इज न्यूट्रल, ओके। एंड इन शेड्स के जो फाउंडेशंस भी होते हैं, इन टोन्स के फाउंडेशन मैंने एक्चुअली रेडी रखा है ये आप लोगों को दिखाने के लिए, हाउ यू अंडरस्टैंड कूल एंड वार्म अंडरटोन, ठीक है। सो दीज आर येलो एंड पीच मिक्स, ठीक है। सो ये पूरा लाइन जो है, दिस एंटायर लाइन इज येलो अंडरटोन, दिस एंटायर लाइन, क्योंकि नीचे येलो करेक्टर है, यहाँ पीच करेक्टर है, तो दिस इज ऑल पीची अंडरटोन। सो इफ यू सी, ये दोनों टोन्स जो हैं बहुत सिमिलर काइंड ऑफ, जैसे कितने गोरे हो और कितने डार्क हो, वो अगर आप सोचो तो ये दोनों इक्वल एट पार रेंज पे टोन्स है, टोन्स अंडरटोन्स नहीं, ठीक है, बट इनके अंडरटोन्स अलग है। सो ये इंसान जो लगाएगा और ये जो इंसान लगाएगा, शायद आप देखोगे तो आपको इक्वली गोरे लगेंगे, ठीक है। ये भी उतना ही गोरा लगेगा जितना कि ये है, लेकिन इन दोनों में फर्क सिर्फ अंडरटोन का है, ओके। सो आई विल जस्ट स्वॉच समथिंग फॉर यू हियर, ठीक है। दिस इज येलो अंडरटोन बिकॉज आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम, गाइस प्लीज पे अटेंशन हियर, ओके। आप क्वेश्चंस थोड़े टाइम बाद लिख लेना, अभी आप यहाँ पे सुन लो जो है, उसके बाद हम क्वेश्चंस फिर देखते रहेंगे, बिकॉज दैट्स ऑल वी हैव टू डू टुडे। सो दिस इज द येलो के ऊपर वाला, दिस इज येलो अंडरटोन, व्हिच मींस दिस इज वार्मर अंडरटोन, सो दिस लुक्स मोर वार्म, है ना। दिस इज पीच अंडरटोन, व्हिच मींस दिस इज मोर कूलर अंडरटोन। तो इसका मैं दूसरे फिंगर से ले रही हूँ, आप देखोगे किस तरीके से ये एक पीची इफेक्ट दे रहा है। दोनों अगर आप लगाने जाओ ये दोनों कंसीलर या फाउंडेशन किसी एक इंसान पे, तो आपको समझेगा, मतलब जो कूलर अंडरटोन है वो अगर ये लगाए और जो वार्मर अंडरटोन है वो ये लगाए, और आप दोनों को देखोगे तो ये दोनों कलर लगाने के बाद सेम लेवल का टोन है, टोन नॉट अंडरटोन, टोन विच मीन्स ऊपर का जो कलर है, स्किन का जो कलर है, वो उतने ही गोरे हैं, दोनों उतने ही गोरे हैं, लेकिन ये वाला जो है उसका अंडरटोन अलग है, and that's how you choose. You see, I will swatch another little darker color. This is again yellow undertone, ठीक है। And now I will take peach undertone, which is cool. This is cool, this is warm. Can you see the difference? आपको देख के ही समझेगा कि ये येलो है, पीच है, पीच है,
Are you guys understanding? These are shades from MAC Cosmetics. MAC Cosmetics के अगर आपने शेड्स अंडरस्टैंड किए ना, तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड फाउंडेशन कॉन्सेप्ट, बिकॉज इतने सिंपल तरीके से उन लोगों ने अपने फाउंडेशंस को नेम किया है कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा टू चूज शेड्स एंड टू अंडरस्टैंड मोर ओवर. द ओनली गड़बड़ दैट दे हैव डन, not gadbad, I don't know what is their concept behind naming it like that, but in MAC all the foundations which are yellow based are named as NC, and all the foundations that are peach based are named NW. Okay, now हमने जो सीखा है थ्योरी ऑफ मेकअप में वो ये है कि NW is cool and oh my god, okay, I sent you these. अच्छा, Like all in one tray. This has been sent to me directly. Yeah, Or this yeah. is Yeah, like I all copied all the previous ones and I text you like in one, okay. that you don't have to scroll up. Don't worry. I will take it up. Relax. आराम करो. Okay. हाँ, तो क्या होता है, NW का full form is neutral warm and NC का full form is neutral cool. ठीक है? But yellow based तो warm colors होते हैं और peach based और pink based तो cool colors होते हैं. तो इनका ये मतलब है कि using this foundation on a warmer undertone, it will make it little neutral cool. I don't know, I'm just giving you some extra information. अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ज़्यादा लोड मत लो. जितना अभी इससे पहले मैंने स्वॉच करके समझाया उधर तक भी समझ में आया तो it's well and good. It's just that जैसे जैसे शेड का नंबर आगे बढ़ता है वैसे वैसे शेड्स फाउंडेशन के डार्क होते जाते हैं. So NC15 is yellow based, very light color of foundation, and NC 45 is warm, like very dark shade of foundation in yellow based. Similarly, NW15 is very light shade of foundation in peach and pink based, and NW45 or NW50 is very dark color of foundation in peach undertone or pink undertone. ठीक है? I hope this clears your doubts related to undertones and selecting foundations and how to choose undertone and how to choose foundations. Okay? And moreover, अगर आप लोगों को नहीं भी समझा है तो आप ये बेसिक चीज़ें नोट करके रखोगे ना कि कौन से cool undertone कौन से होते हैं. Cool means water, which means blue, and green is warm, and green उसी के ऊपर उन शेड्स पे होता है जो देखने से आपको गोल्डन और येलो दिखते हैं, और गोल्डन येलो और सन. ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट है वो भी दिमाग में रख लिया ना. स्लोली when you play with foundations and when you use foundations and when you see कि किस तरीके से अलग अलग foundations आ रहे हैं मार्केट में और किस तरीके से वो नेम हो रहे हैं, थोड़ा सा डिटेलिंग में. कभी भी नायका ओपन करना, टार्ट कॉस्मेटिक्स का ऑफिशियल साइट ओपन करना, एंड देखो कि उनके फाउंडेशंस को किस तरीके से नेम किया गया है और किस तरीके से प्लेस किया गया है. उनके स्वॉचेस भी डालते हैं तो वो लोग लाइट टू डार्क स्वॉचेस डालते हैं और हर एक शेड मतलब टोन के अंडरटोन्स भी होते हैं, विच मीन्स जैसे NC15 है और NW15 है, जैसे मैंने समझाया दोनों इक्वल गोरे लोगों पर जाता है लेकिन उनके अंडरटोन्स डिफरेंट है, इसीलिए अलग फाउंडेशन बनाया गया है उनके लिए. अंडरस्टूड? ऐसे हर ब्रांड में होता है. So you should just read about those brands and read their just basic study. आप मैं ये करती हूँ. I like doing it. Any नया foundation, any नया brand that comes up or anything which is very known, वो लोग
मतलब कोई भी नोन ब्रांड होता है जो बहुत पॉपुलर है फाउंडेशंस को लेके, तो आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट नेम दे हैव पुट, उसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, गोल्ड, सैंड, बेज, आइवरी, इसका क्या मतलब होता है, आइवरी इज मोर वाइट, गोल्ड इज मोर ऑलिव, मतलब ये वार्म टोन पे जाएगा, सैंड इज मोर इंडियन टोन्स के ऊपर सैंड कलर्स बहुत जाते हैं। सो ये सब आप खुद जब स्वॉच करोगे ना, आपको अपने आप 1-1.5 साल के बाद ये कॉन्सेप्ट ही भूल जाओगे कि अंडरटोन क्या होता है, ये वार्म है, ज़्यादा कूल है, ज़्यादा, यू जस्ट लुक एट पीपल्स skin and you will randomly pick up right foundation and start doing it, because ये सिर्फ beginner level पे काम आता है, as in when you start working on different faces अपने आप ये आपका हो जाएगा. So don't worry if you fail to pick the right foundation, just try to rectify it. and अपने experts के साथ इसीलिए do it together session में आप लोग हमेशा, I would request कि do it together session में always try to do the look with the expert, so that during spotlight session you can get the feedback. Okay, you'll get the feedback as to the foundation shade that you've chosen is right or not, etc. And that is how you will rectify your mistakes, work on your feedback and learn. ठीक है? Okay, so anything related to cool tone, warm tone, foundation, undertone and all, I am not going to take it more than this because मैंने बहुत अच्छा खासा time दे दिया है. Anyone who wants to listen to it again can go through the recordings. Okay? Okay, oily acne prone skin के लिए किस based products use करना है, for extra oily के लिए water based moisturizer use करते हैं, like that. So if you have oily skin, then you will obviously use something which is more mattifying, right? So products, anything which is more silica based can be used for oily skin, so that it has oil controlling properties, right? तो वो आपको mattifying look देता है for longest period of time, that it makes your foundation also stay for long. Hence the primer that you use is also silicone based. Okay, for oily skin, that's what you need to do. Okay. डार्क स्किन के लिए कौन सा फाउंडेशन मिक्स करके यूज करें? डार्क स्किन के लिए आप डार्कर फाउंडेशंस यूज करोगे. दिस इज समथिंग दैट यू जस्ट हैव टू स्वॉच एंड चेक कि नेचुरल स्किन टोन और मैंने जो लगाया है वो एकदम सेम है या नहीं. वो तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही पता चलेगा. आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि जो कलर है स्किन का, बस वही कलर का फाउंडेशन मैं चूज करूँ. उसके बाद आप ब्राइटन कर सकते हो बाय यूजिंग अ लाइटर कलर ऑफ फाउंडेशन और कंसीलर ऑन द हाई पॉइंट्स, जस्ट टू मेक द होल मेकअप लुक ब्राइट. बट ओवरऑल फेस पे जब फाउंडेशन लगाते हो तो बिल्कुल भी लाइट कलर का नहीं लगाना है. जो भी जितने भी डार्क, अगर बहुत डार्क है कोई, तो उतना ही डार्क फाउंडेशन आपको लेना पड़ेगा. इसीलिए we suggest to have at least 3 foundations. Basic kit में initially extremely light, extremely dark and a medium, so that you can keep mixing and creating in between colors. Okay. I'm really confused about concealer. That day you said we have to use 2 shades darker, and the other day ma'am said 1 shade lighter concealer. Can you explain this? Okay. कंसीलर लाइटर तब यूज करते हैं जब आपको कुछ हाइड नहीं करना है. अगर आपको कुछ भी हाइड करना है, विच मीन्स कुछ कवर करना है, तो आपको डार्क कंसीलर यूज करना होगा. आप कंसीलर किस पर्पस के लिए यूज करते हो वो भी मैटर करता है. कई बार नेचुरल कलर ऑफ कंसीलर यूज करते हैं लोग क्योंकि उनको वो एज अ फाउंडेशन यूज करना है, क्विक फाउंडेशन. जैसे आज मैंने अपने ऊपर किया, आई डेंट यूज अ फाउंडेशन, मैंने अपने ही कलर का कंसीलर लिया, टक 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 एकदम क्विक स्वॉच कर लिया, सॉरी blend कर लिया, and I used a Studio Fix powder on it so that I get a quick makeup look. Now you can see I have properly covered my face till it doesn't look too overdone.
So it completely depends on the purpose why you are using that. One shade lighter can be only after maybe you've used a lot of orange corrector. कुछ भी हो सकता है, अभी उनका पूरा प्रोसेस क्या था वो मुझे नहीं पता, पर अगर आपने बहुत ज़्यादा ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप लाइटर टोन ऑफ कंसीलर यूज़ कर रहे हो या व्हाट इट इज़, दैट आई रियली डोंट नो, बट द concept behind choosing the color of concealer is basic. Darker concealer you use, you get more coverage. Lighter concealer you use, you get more highlighted look. Highlighted, which means you're bringing up, you're looking more brighter. So that's the purpose, you use lighter. If the purpose is covering and coverage, you use darker. Simple. ठीक है? I understood color wheel, but when in person I tried creating secondary color, there was a different color formed compared to the color wheel. I tried mixing red and blue to create purple, but it looked like violet. Where did I go wrong? Bhakti, maybe the proportion, and purple and violet are, so see now what exact tone of blue you've used, that also matters. If it's like what is the kind of blue, let me check. आज मैं आप लोगों को वैसे तो ये सिखाने वाली हूँ, मतलब मैं करने वाली थी, इसलिए I had the lipstick palette also with me. Yeah, so I have blue. So don't worry, ये हम towards the end वैसे भी करने वाले हैं. I have the lip palette with me. I'm going to be using the primary colors and showing you how to create secondary colors with it. Okay. And Bhakti, if you have the same palette, maybe just keep it ready with you. हम जब करेंगे तब आप भी मेरे साथ करना, फिर हम देखेंगे if you still face any problems or issues. Okay. स्किन टोन पार्ट समझा दीजिए. समझा दिया मैम. ट्रांसलूसेंट पाउडर किस टोन पर लगता है? सब टोन पर लगता है. ट्रांसलूसेंट पाउडर में ज़्यादा कुछ कलर ही नहीं होता, वो सिर्फ इसीलिए होता है कि आपके फाउंडेशन को लॉक कर दिया जाए, तो जो भी आपका कंसीलर और फाउंडेशन का कलर है वो चेंज ना करते हुए आपके फेस को पूरी तरीके से मतलब मैटिफाइंग लुक मिले बिकॉज ऑफ द क्रीम प्रोडक्ट दैट यू हैव यूज्ड. यही काम होता है. तो उसमें अंडरटोन इतना ज़्यादा नहीं, मतलब कलर आता ही नहीं है, तो डजंट रियली मैटर व्हाट टोन यू आर यूजिंग. बट एकदम भी लाइट, मतलब वो कितना ट्रांसलूसेंट है उस पर डिपेंड करता है. एकदम भी लाइट फाउंडेशन अगर आपका है और आप बहुत डार्क कलर का ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा रहे हो तो दैट्स रॉन्ग. try to use something which is very translucent. जितना ज़्यादा ट्रांसलूसेंट हुआ पाउडर उतना वो कोई भी टोन के ऊपर जाएगा. जितना ज़्यादा कलर पिगमेंटेड रहा उस पाउडर का उतना आप स्किन टोन वाइज चूज करेंगे उसको. Face charts are different, like smooth and rough. Yes, Muskan. Moreover, you are supposed to focus on textured paper. The more texture you see on the paper and the more roughness you see on the paper, the better product ka color payoff comes on the paper and it becomes easy to blend. The more smoother the paper, the less product it adheres. मतलब वो पकड़ना चाहिए product ना paper को, वो smoothness जब ज़्यादा आ जाती है तो product नहीं पकड़ पाता paper. जितना उसमें texture होता है उतना product पकड़ पाता है, तो दिखता है evidently. Ma'am, color bar foundation use in hot in summer or not? Completely depends हेमा, आप कौन सा वाला यूज़ कर रहे हो. अगर वो ड्यूई फाउंडेशन है जो आपको ड्यूई फिनिश देता है तो आप समर्स में अवॉइड करते हो क्योंकि ड्यूईनेस आपको समर्स में नहीं चाहिए. अगर आपके पास मैटिफाइंग फाउंडेशन है जो आपको एकदम वाटरप्रूफ फाउंडेशन है वो आप समर्स में यूज़ कर सकते हो. मैटिफाइंग फाउंडेशन है वो आप समर्स में यूज़ कर सकते हो. तो it depends now what foundation you are choosing. कलर बार हो या कोई भी ब्रांड हो, you need to understand कि वो प्रोडक्ट का फीचर क्या है and accordingly you use. प्लस आप जिसके स्किन पे काम कर रहे हो, अगर आप जिसके स्किन पे काम कर रहे हो उनका स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है तो despite being summer you can use something which gives dewy finish.
मैम कौन सा कलर यूज़ करें कलर व्हील में से अगर कभी हमारे पास फाउंडेशन नहीं हो हमारे क्लाइंट फेस टोन का, कैसे बनाएंगे फाउंडेशन उनके टोन का? कलर व्हील से आप फाउंडेशन नहीं बनाते। आपके पास फाउंडेशन नहीं अगर हो तो भी आपके पास कंसीलर पैलेट होना चाहिए जिससे आप पूरा बेस बना सको। आप किसी भी ब्राइड का बेस इससे नहीं बना सकते ना, आपको कंसीलर पैलेट तो रखना ही होगा। Okay, you can create shades, tints and shades using this palette, but not for your base. Okay, for your base, you need to have foundation or concealer palette like this. So that foundation नहीं भी रहा अगर, तो आप concealer palette से full face base कर सकते हो। कौन सा पैलेट करेक्टर का? बहुत सारे आते हैं शिवानी। आप क्राइलिन यूज़ कर सकते हो, आप एले गर्ल यूज़ कर सकते हो। उनका पैलेट तो नहीं आता लेकिन सिंगल सिंगल शेड्स आते हैं उनके। PAC यूज़ कर सकते हो, मैक यूज़ कर सकते हो, शॉपरेल है एक जिनका पैलेट है। सो देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स। आप इनिशियली सिर्फ प्रैक्टिस के लिए अगर टोन्स अंडरटोन्स अंडरस्टैंड करना है तो कोई भी सस्ता ब्रांड यूज़ करो। जब आपको ब्राइड्स करने के लिए चाहिए तब आप थोड़ा प्रीमियम ब्रांड यूज़ कर सकते हो। Ma'am, when to use a concealer and when a bronzer? Okay, concealer, Gauri, is for correction, is for coverage, like you all know. Okay, guys, 1 minute. Okay, I'm back. So, yes, so correct. Concealer is used to get coverage, to cover the unevenness of your skin. Okay, when it comes to the discolorations that you have on your skin, जो भी pigmentation है, dark circles है, ये सबको cover करने के लिए हम concealer use करते हैं. Bronzer is completely a different product. It has got nothing to do with the concealer. Okay. कंसीलर क्रीम फॉर्म में आता है, ब्रॉन्जर पाउडर फॉर्म में आता है। ब्रॉन्जर इज जस्ट जो मैंने अभी ब्लश से किया है, आप यही चीज़ ब्रॉन्जर से करो तो ये आपको एक बहुत ही फ्रेश लुक दे रहा है बिकॉज इट इज़ नाइस एंड पिंक एंड गिव्स यू अ नाइस प्लेफुल क्यूट काइंड ऑफ अ लुक, राइट। यहाँ पे अगर मैंने ब्रॉन्जर लगा दिया और ये जो लाइट्स है उसके ऊपर हिट करते तो बहुत ही सन किस्ड लुक दिखता फिर। तो ब्रॉन्जर इज मोर ओवर यूज्ड ड्यूरिंग द डे instead of a contour. You can replace contour to a bronzer when you are using it during the day and it's nice and sunny and you want that nice sun-kissed look. So that's when you use a bronzer. So that's the job of a bronzer, and I explained you what a concealer is used for. Okay. Can we use a tinted moisturizer instead of foundation for acne prone skin? Depends on Gauri, it depends on what look are you creating, whom are you actually doing this makeup. Is it a bride? If it's a bride, then definitely not a tinted moisturizer. Tinted moisturizer will give you more of a everyday look. तो आपने tinted moisturizer अगर अपने ऊपर daily basis में लगाया और उसके ऊपर एक compact powder लगाया, जिससे आज जो मैंने makeup किया है, ये मैंने foundation use ही नहीं किया है. I've just used very minimal water based liquid ही एकदम MAC का face and body foundation होता है. So वो लगाने के बाद it's as good as a BB cream. And just used Tarte concealer and powdered it with Studio Fix powder. So this is my everyday makeup look, right? If this is something that you're looking at achieving for your client or for yourself, then you can replace tinted moisturizer foundation with a tinted moisturizer. ठीक है, बट अगर आप किसी क्लाइंट के ऊपर मेकअप कर रहे हो, जैसे कि कोई
पार्टी मेकअप है, ब्राइडल मेकअप है, या एनी मेकअप जहाँ पे सामने वाले को किसी इवेंट पे जाना है, तो फाउंडेशन इज कंपल्सरी. इट इज इम्पॉर्टेंट. यू कांट रिप्लेस एनीथिंग foundation. Okay. LA Girl Pro Coverage Pore Slim Foundation. Okay, for warm tone. Okay, Mithul, nothing to do with warm tones. Any professional range of brand, any brand which has a professional range of products will have warm and cool tones both. So आपको warm tone है इसलिए आप LA Girl यूज करोगे, ऐसा नहीं है. आपका कूल टोन है इसलिए आप टाट यूज करोगे, ऐसा नहीं है. हर ब्रांड के पास आपको वार्म और कूल दोनों मिलेंगे. सो इफ यू लाइक द टेक्सचर एंड इफ यू लाइक द फिनिश ऑफ LA Girl, then even if you have cool or warm, irrespective of what tone you have, you can use the brand. न्यूट्रल टोन कैसे पहचाने? मैंने टोन, अंडरटोन सब बता दिया है मैम. कलर व्हील के बारे में हम टुवर्ड्स द एंड एक प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं, सो यू विल कम टू नो अबाउट दैट. How can we cover major dark circle on dark skin tone? Because whenever I try to hide the dark circle, it turns more visible and sometimes it looks white on the under eye area. Okay, so you need to understand that the more darker the tone you're working on, उनका जो unevenness है वो और dark होता है. So you need to have darker tones, like darker colors. This is a dark color of foundation, ठीक है, concealer. But if I swatch this on someone who is dark, sometimes this literally works like a highlighter on them. Okay, so we need, which is why मैंने बताया था कि everyone should have at least one extremely light foundation and extremely dark foundation, क्योंकि इंडिया में especially you will see सब टाइप के टोन्स. आपको बहुत गोरे लोग भी मिलेंगे, आपको बहुत डार्क लोग भी मिलेंगे, आपको मीडियम लोग भी मिलेंगे. सो यू जस्ट कांट गेज. डिफरेंट मार्केट माइट हैव स्पेसिफिक टोन्स, बट व्हेन यू सी ओवरऑल इंडिया में आप देखोगे तो आपके पास होना ही चाहिए डार्कर टोन. अंडरस्टूड? सो वही डार्क टोन के आपके पास कंसीलर्स भी होने चाहिए. इट्स इम्पॉर्टेंट. एंड जब तक आप जो टोन है वो एग्जैक्ट टोन का कलर नहीं लगाओगे, यू विल नेवर एवर गेट कवरेज. आपकी नजर में ये बहुत डार्क होगा फाउंडेशन, राइट? दिस इज वेरी डार्क, बट ट्रस्ट मी, डार्कर टोन्स के ऊपर ये भी लाइट लगता है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कब आपको और डार्क जाना है. अगर आपको वाइटिश लुक दे रहा है वो अंडर आई एरिया में, which means you need to go even more darker. And there is no harm in doing that. It's absolutely fine if you have to use a darker tone. If you think कि मैंने और डार्क फाउंडेशन लगाया तो ये और डार्क लगने लगेगी, तो वो गलत है. वो कॉन्सेप्ट ही गलत है. आपको वो मिथ अपने दिमाग से निकालना है, नहीं तो आप कभी कवरेज नहीं हासिल कर पाओगे. You have to use extremely dark foundation and extremely dark concealers on people who are extremely dark. That's the only way out to get proper coverage. Otherwise it will turn, जितना ज़्यादा डार्क स्किन के ऊपर आप लाइट कलर लगाओगे उतना ज़्यादा वो वाइट, और उतना ज़्यादा ग्रे, उतना ज़्यादा डल लगेगा. ओके, जितना आप लाइटर टोन्स और मीडियम टोन्स के ऊपर थोड़ा लाइट लगा लोगे ना, उतना डल नहीं लगता, उतना वाइट और ग्रे नहीं लगता जितना कि वार्म टोन्स पे लगता है. इसलिए वार्म टोन्स पे यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद द टोन्स ऑफ फाउंडेशन दैट यू चूज. स्किन पर pH बैलेंस के बारे में भी एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज. pH balance is more, it has nothing to do with makeup, Simranjeet. It's more about skincare. That's more scientific. So I would suggest at this stage not get too much into detail of that. Let's focus on the base of makeup that we've learned till the time your last session has happened. Okay, with time you will yourself understand, and you will yourself, this is not actually a part of makeup. What to do if client refuses to pay advance?
If the client refuses to pay advance, you can always tell them that your booking will not be confirmed unless or until I receive an advance payment. So आप नहीं पे कर रहे हो तो चलेगा, आप मत पे कीजिए, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। अगर तब तक मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिलता है तो मैं आपका ऑर्डर ले लूँगी, और अगर उससे पहले मुझे कोई और ऑर्डर मिलता है जो मुझे ज़्यादा पे करने के लिए रेडी है, तो फिर मैं, और वो मुझे एडवांस भी दे रहे हैं, तो फिर मैं उनका, बिकॉज दिस इज अ बुकिंग अमाउंट, इफ यू आर नॉट पेइंग इट विच मीन्स यू हैव नॉट बुक्ड मी, एंड आई वुड स्टिल टेक अप योर बुकिंग, बट दिस विल बी अ डाइसी बुकिंग, विच मीन्स अगर मुझे कोई और आता है मेकअप ऑर्डर विच इज़ अ बिगर ऑर्डर, then I would take that up. Not even a bigger order. Don't mention about bigger order. Any order who's ready to pay me a booking amount, I will confirm their booking. और अगर कोई बुकिंग नहीं आता है तब तक, तो आप तभी करवा लेना. So you are not stuck. And कहाँ गई मैं? लिंक मैम, एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए कौन सा फाउंडेशन वी शुड टेक केयर फॉर ब्राइड? एडवांस वाला कहाँ गया? करे हाँ, रेवोल्यूशन लूज, हाँ, रेवोल्यूशन लूज पाउडर कौन से स्किन टोन पर यूज होगा? लाइटर टू मीडियम स्किन टोन पर रिद्धि, यू कैन नाइसली लाइक use the revolution loose powder. The more warmer tone or the more darker tones you work on, I would suggest to avoid using any white color powder. ठीक है, लाइटर टू मीडियम, मीडियम मतलब मुझसे भी थोड़ा और वार्म हो कोई, मुझसे भी थोड़ा डार्क हो, तभी भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन जस्ट 1 or 2 shades darker than me, not more than that. It just helps to brighten up your face, so you can use that for such people. But very dark tone, if you use white powder, it starts looking very gray. So many questions. Okay. Baapre. Hi everyone. Hi Aisha. Hi. How is it going? Yes. It's going good. It's going nice. A lot of questions. I'm just one by one taking them up. Okay, no issues. Members, if you feel free, you can unmute yourself and also ask. That is also fine. You can raise your hand and we can go one by one and you can ask your question. वो भी चल जाएगा, ठीक है? Hello. Hi. Awesome. Wow, people know you by your voice. I was kind of little confused. I was like, मैं पूछूं क्या ये योलांडा है? But Oh, what are you like? you serious? Hello. Because I was actually interacting with Isha, so like suddenly. No, I came to this session. Isha is hosting another session, so she had to go. No problem. How are you, YOLO? All good, all good. After such a long time, I'm in a bad session, matlab aise. But yes, happy to be here. Sweet. Okay, let's move forward. Explain color. Many. Oh my god, now I'm lost. Revolution loose powder मिल गया. मैम, कंसीलर लगाने के बाद अंडर आइज पे फाइन लाइंस क्यों आते हैं? सोल्यूशन फॉर दैट, कंसीलर लगाने के बाद नहीं आते हैं, वो ऑलरेडी रहते हैं, बस ये है कि वो दिखते नहीं है क्योंकि डार्क होता है ना अंडर आई हमारा. जब भी कोई चीज़ डार्क होती है ना, वहाँ शैडो की वजह से चीज़ें ढक सी जाती है, पर जहाँ पे इवननेस आ गया ना, तो हर चीज़ उभर के दिखने लगती है. Understood? That's why we use contour to just
हाइड और पुश बैक थिंग्स दैट वहाँ ज़्यादा नज़र ना जाए। तो जब भी अंडर आइज में डार्कनेस होता है तो फाइन लाइंस इतनी दिखती नहीं है, क्योंकि वो एरिया ही शैडो हो जाता है। द मोमेंट वो इवन हो जाए, विच मीन्स ब्राइट हो जाए, तो जो भी फ्लॉज है वो और उभर के दिखते हैं। इसीलिए आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा whenever you're working on people who have textured skin or skin with fine lines or wrinkles, right? So what you do is you take extra precaution by using right kind of skincare, and especially under eye cream for people who have fine lines on the under eye area. Okay, and whatever concealer and foundation you're using, try not to use something very heavy. So the consistency should not be very thick. It should be something which is medium to buildable coverage, not very heavy. It's okay if it is not 100% covered, but because of the fine lines, your makeup can just start cracking or start looking dry. तो वो आपको खास तौर पे ध्यान देना है कि ये अंडर आई एरिया में टेक्सचर होने की वजह से आप कवरेज पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, पर टेक्सचर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि दैट अलोन विल हेल्प योर मेकअप टू स्टे longer and give you the right kind of finish. Never over powder under eye area for people who have dry skin, and they are particularly those people who have fine lines. Okay, so use loose powder and very minimal powder. Use light weighted foundation and very not very thick or heavy concealers. That will, and quantity of product also matters. You need to choose the right color of concealer in order to get coverage. The quantity of product doesn't justify the coverage, but the right tone of concealer actually helps you to get the right kind of coverage. So अगर आपने सही tone of concealer चुना है तो bare minimal product से भी आपको coverage मिल सकता है। इसीलिए उन स्किन टोन, उन स्किन पर जिन पर ज़्यादा फाइन लाइंस होते हैं या ड्राई स्किन है, आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते विद टोन्स कि मैं इस पे ये लगा कर देखूँगा कैसा लगता है। नो, बी वेरी केयरफुल विद कलर यू आर यूजिंग. यू माइट एंड अप यूजिंग टू मेनी प्रोडक्ट्स, टू मच ऑफ प्रोडक्ट टू गेट द राइट काइंड ऑफ कवरेज इफ यू आर वर्किंग ऑन ड्राई स्किन. ठीक है, सो the hack here is choose the right shade of concealer so that bare minimal product से भी आपको coverage मिल जाए. How to hide excess face hair? You can't hide excess face hair, or you can't hide face hair or facial hair at all. Any kind of texture that you have on your skin will always be there. It might just look a little blurred. थोड़ा blur effect आ सकता है, कम दिखे ऐसा हो सकता है, लेकिन completely ना दिखे ऐसा नहीं हो सकता. अभी आप देखोगे this color can be skin like. हम इसका color को एकदम skin like color दे सकते हैं, लेकिन ये जो bump है वो नहीं जाएगा. Okay, so we have to accept that. If I come closer, I don't know if you all can see, but let me just show you now. There are facial hair visible. You either take them off, razor use करके, face razor, not the razors that you get in the market, वो वाले shaving वाले, no. Face razor जो होते हैं वो use करके you can take them off, ask them to wax it, whatever they are comfortable. But if they are not comfortable at all, for removing, they don't allow you to remove the hair, then they have to live with it, and the makeup will be थोड़ा सा ऊपर नीचे, क्योंकि facial hair के साथ आपको एकदम even tone, even texture वाला makeup नहीं मिलता, थोड़ा बहुत वो दिखता ही है, and you can't do anything about it. How to cover orange concealer properly, because many times orange is on skin. Okay, मुस्कान, orange corrector आपको उतना ही यूज करना है जितना आपको required है. अगर वो बहुत orangey लग रहा है और आपको ज़्यादा product लगाना पड़ रहा है उसको neutralize करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके orange corrector के consumption पे कुछ तो गड़बड़ है. ठीक है, so you need to start using orange corrector very minimal.
ज़्यादा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, जितना ज़रूरत है बस ऐसे पैट पैट करो और उसके ऊपर कंसीलर लगा दो, ठीक है? ज़्यादा ओवर ऑरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। मैम कॉन्टोर की जगह भी कुछ और यूज़ कर सकते हैं? कॉन्टोर की जगह कॉन्टोर ही यूज़ होता है या फिर ब्रॉन्जर यूज़ होता है। जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया ब्रॉन्जर क्या काम करता है। अगर आपको ब्रॉन्जर नहीं यूज़ करना है और आपके पास कॉन्टोर प्रोडक्ट नहीं है तो आप अपने आई शैडो पैलेट्स में से कोई भी ऐसा कॉन्टोर कलर का आई शैडो यूज़ कर सकते हो, ठीक है? But there is no replacement of a contour. You'll have to use it if you want to create that chiseled look. If you have a model or your client who has extremely chiseled face and she doesn't need contour at all, then just skip and add a nice blush like how I've done today, only blush, and that also works. How to cost for makeup? Okay, costing and all uh, completely depends on the level of experience and the level of artistry. Initially, you'll have to start with quoting less amount so that you create your clientele. And after some time, when you start getting more clients and you have a lot of work to showcase, you gradually raise your price. And as in when you raise your price, you need to ensure that you have some kind of change in the way you are doing your makeup or the products that you are using or the service that you're providing or whatever. There are a lot of ways you can accentuate your services and you can give something more and justify the cost that you are charging. The more the more you justify the cost, the easy it becomes for your clients also to accept the change. ओके ऐसे नहीं कि एक साल मैंने 10,000 चार्ज किया मेकअप के लिए, सडनली अभी एक साल हो गया ना मुझे, तो मैंने मेरे मेकअप रूटीन पे या मेकअप में या फिर मेरे वैनिटी में या फिर मेरे सर्विसेज में कोई चेंज नहीं किया, बट जस्ट बिकॉज एक साल हो गए अब मुझे बढ़ाना पड़ेगा प्राइस, तो मैंने 10,000 से 15,000 कर दिया. You'll straight see a dip in your business, which means people will be like एक साल में कोई 10 से 15 कर रहा है, मुझे 10,000 में अभी भी कोई और मिल रहा है, मैं वहाँ चली जाऊँगी. But when you're charging 15,000 and you are giving something more, then you can justify why are you charging that much. Do you understanding my point? This will help you to quote that much and see a significant rise in your business. अभी मैं फिर भूल गई, आई एम लॉस्ट. ओके जगह यूज कर सकते हैं कॉस्ट फॉर मेकअप. इज इट कंपल्सरी टू यूज जस्ट वन शेड ऑफ फाउंडेशन और वी कैन मिक्स शेड्स डिपेंडिंग ऑन दिस? एब्सोल्युटली प्राची, you can mix, create shades. That's the job of a makeup artist. That's what you're here for. The more artistic mind you use, the better artist you become, and the more confidence is what you gain. So keep doing that. Mixing shades and creating colors is a job of an artist. You're not restricted to just use one shade at all. Best concealer to hide dark circles and acne spots. There are a lot, Vanshi. One of my favorites would be Huda Beauty and Tarte Cosmetics. What is olive undertone? Olive undertone, if you Google, you can see olive undertone. Let me show you. That's a color which you will have to see. Olive undertones. There you go. Olive is more green. हाँ देखो, है ना थोड़ा ग्रीनिश. ऑलिव कलर कैसा होता है? आपने कभी ऑलिव देखा है? एक्चुअल ऑलिव, ऑलिव का कलर कैसा होता है? मतलब द सैलड वाला ऑलिव, फ्रेश वाला, नॉट द ब्लैक वन. ऑलिव कलर इज समथिंग लाइक दिस. सो वैसे वो ऑलिव अंडरटोन जो थोड़े और ग्रीनिश दिखते हैं, दैट इज ऑलिव.
मैम फेशियल हेयर को कैसे मैनेज करेंगे अगर वो रिमूव ना हो तो there is no way, Khushbu. Like I said, you have to live with it. You have to explain the client that since you are hesitant to remove that, this will keep showing. You can't hide. थोड़ा बहुत तो blur effect आता है, लेकिन makeup will never conceal or cover texture on your skin, and that is basic. We can't do anything about it. We are not magicians to just do everything that the client wants. There are certain boundaries and there are certain restrictions where we can't move more than, move ahead more than that. How to contour our nose. That, Vanshi, do it together sessions mein you will keep learning more and more about such artistry techniques. But for now, I can let you know that using a smaller tool like this will always help you to draw cream concealer से cream contour ऐसे करके आप उसको smudge कर सकते हो, blend कर सकते हो, and then over that you use contour powder and just pat थोड़ा सा सेंटर में भी एक शेडिंग देना है, एकदम ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ करनी, बट एक हल्का सा शेडिंग देना है, एंड दिस okay. If you want, I mean that's too advanced, but anything that you see is coming out is always meant to be highlighted. Anything that is going in is supposed to be contoured. So this is going in, that's why you contour this. This is going in, that's why you contour this. And if you have very, very pointy nose, so you don't contour anything. Don't do anything to the nose, because the more you contour, the more it will look pointy. If you have flat nose, then you contour, and then you do not at all use any kind of a highlighter, because that's the part which is flat. आप उसको और accentuate कर रहे हो by adding shine over there. So just do contouring and leave it the मतलब मैट हाईलाइट आप कर सकते हो लाइटर कलर का फाउंडेशन या कंसीलर लगा के, बट शाइन अवॉइड करो. व्हेनेवर यू हैव टू मच टू डू विद द नोज, बहुत ही अलग शेप का है, तो वहाँ पे सिर्फ कंटोरिंग कर सकते हो या कुछ भी मत करो. हाईलाइटर तो यूज ही मत करो. द मोर हाईलाइटर यू यूज ऑन एनीथिंग दैट नीड्स करेक्शन, यू आर बेसिकली जस्ट हाईलाइटिंग द फ्लॉ. Okay. अलीशा, ये उसका फ़ोन है, उसकी बहन का, रश्मि की. ओके, सो हम अभी कहाँ हैं? Tints, how to contour. What is value, tints and shades? Value, I don't understand. But tints and shades are usually किसी भी एक कलर में जब आप वाइट ऐड करते हो तो उसके टिंट्स आते हैं, और ब्लैक ऐड करते हो तो उसके शेड्स आते हैं. सो डार्कर आर शेड्स एंड लाइटर आर टिंट्स. समर में ब्राइडल को कौन सा फाउंडेशन यूज करें या कौन सा मेकअप करें? समर में यूजुअली आपको ड्राई रखना है, पसीना ज़्यादा आता है, ऑयली ज़्यादा होता है स्किन टोन, तो यू आर सपोज टू यूज़ मोर मैटिफाइंग फाउंडेशंस एंड मैटिफाइंग स्किन केयर. However, it's not only the weather conditions, but it's also how your skin is reacting and how your skin is naturally, like I mentioned earlier. You have to incorporate all of these things together and choose the right kind of product. Okay. How to cover black, darkest blue, dark circles on mature skin? By using an orange corrector, Muskan. Orange corrector और concealer के साथ ही आप वो कर सकते हो. But just choose the right shade. The moment you use orange corrector and you use lighter color of foundation or concealer, so you will not get coverage. You need to use उसी टाइप के कलर का, यहाँ के कलर का, यहाँ के कलर का नहीं, यहाँ के कलर का आपको फाउंडेशन चूज करना है, कंसीलर चूज करना है, सॉरी नॉट फाउंडेशन. This Charlotte Tilbury foundation and compact, very good. It is very good.
How to cover stretch marks on shoulders and arms. It's again a kind of texture. So the feel that you get वो नहीं cover होगा, but the discoloration that you see वो cover होगा simply by using a heavy concealer and a heavy foundation or powder कर दो उसको. Best concealer for acne prone skin, oily skin, Tarte and Huda Beauty. Best primer for acne prone skin, Smashbox का photo finish smooth and blur primer. And Professional by Benefit. Ma'am, Muslim bride who has warm tone but she wants a cool coverage. Then what to do? No, brides don't understand cool, warm. They will never understand that. They just understand tones. They don't understand undertones unless she is a makeup artist. Okay? And you don't go against nature. So if she's a makeup artist, she will not even want to change her undertone. So, but ideally, brides don't ask for something so tricky like this. They might ask to look brighter. They will not ask you to change how the undertone looks. And if you do that, again, it will not really look good or give the right kind of a finish or coverage because you're going against nature. So you can just simply tell them, आपका जो टोन है हम उस टोन को ही मेंटेन कर सकते हैं. अगर आप दूसरा टोन लोगे तो थोड़े टाइम बाद डल लगने लगेगा. सिंपल. मैम कंटोर की जगह कुछ और यूज़ कर सकते हैं. मैंने बताया था रजनी. ओके मैम डार्क कॉम्प्लेक्शन पर ब्लेमिश हो तो कैसे कवर करें? हाँ, कंसीलर. It's blemishes हो, open pores हो, pigmentation हो, dark circles हो, कुछ भी हो, हर चीज़ करेक्टर, कंसीलर और फाउंडेशन से कवर होती है. आपको सिर्फ राइट शेड ऑफ कंसीलर करेक्टर एंड फाउंडेशन यूज करना है. दैट इज जितना डार्क कॉम्प्लेक्शन है उतना ही डार्क कंसीलर, उतना ही डार्क फाउंडेशन भी आपको यूज करना है. What necessary things we should take while we doing bride? There are a lot of things that you need to take. You need to take your entire kit. You need to take extra tools, brushes, brush cleanser, makeup remover, tissues, wet wipes, cotton pads, Q-tips. You're supposed to take lashes, lash curlers, lash curler, lash glue, everything that comes in makeup, and sanitizer. Yeah. मैम आपसे मैक कंसीलर किट बाय कर सकते हैं क्या? मुझसे नहीं, आप maccosmetics.in पे भी खरीद सकते हो, नायका पे खरीद सकते हो. आई डोंट डू रिटेलिंग ऑफ एनी ब्रांड. मैम फेस पे छोटे छोटे दाने हो, नॉट पिंपल, तो क्या करें? छोटे छोटे दाने अगर आए भी हैं तो अंडरस्टैंड कि वो क्यों आए हैं. समर्स में तो ऐसा होते रहता है, तो यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, कीप इट मैट, ड्राई, यूज टोनर्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रेगुलरली क्लीन अप कराते रहो. फेस वॉश दिन में 2 बार करते रहना है. क्लीन रखना है अपने फेस को. पसीना आया तो ऐसे रहने नहीं देना है. पानी से ही धो दो चाहिए तो. ट्राई टू यूज मोर टिश्यूज टू वाइप योर फेस इंस्टेड ऑफ टॉवल्स, बिकॉज टॉवल्स हम बार बार यूज़ करते हैं. एक बार यूज़ करने के बाद हम उसको धोने में तो नहीं डालते हैं, राइट? पहली बात तो अपने टॉवल्स को बिल्कुल भी शेयर नहीं करना होता है. बट अगर आप अपने भी टॉवल को 2-3 बार यूज़ करो तो फेस इज़ वेरी सेंसिटिव. कभी कभी जो प्रीवियस बैक्टीरियाज है वो रह जाते हैं, एंड देन यू नो इट जस्ट मल्टीप्लाइज, एंड व्हेन अगेन यू यूज द सेम थिंग ऑन योर फेस इट माइट रिएक्ट इफ योर स्किन इज सेंसिटिव. कंप्लीटली डिपेंड्स स्किन टू स्किन. कईयों को नहीं होता है, कईयों को हो जाता है. इसलिए बेटर व्हाट आई आल्सो प्रेफर डूइंग इज use tissues for wiping your face so that you are keeping your skin as hygienic as possible.
That's the only way out. And drink lots of water. Eat healthy. What you are eating also reflects on your skin. आप जितना ज़्यादा जंक फूड खाओगे, टॉक्सिन ज़्यादा बॉडी में रहेंगे, उतने आपके स्किन पे वो दिखने लगता है. How much advance or booking amount should be charged? You can charge around, say, 15 to 20%. कई लोग 50% तक भी लेते हैं. It completely depends on you. How do you prefer? Do you prefer getting a bigger chunk earlier, and then when you are doing the job, that time you're getting just half of it? But the amount should be good enough कि ब्राइड उसे खोने से पहले डरे या सोचे कि अरे यार नहीं. अगर आपने 2-2,500 रुपये लिए या 1-1,500 रुपये लिए तो कभी कभी उनको कोई और अच्छा मिल जाता है ना, तो वो लोग 2-2,500 को नहीं देखते. दे लुक एट द बेटर डील कि यहाँ पे अगर 2-2,500 या 1,500-2,000 भी गए तो भी मेरे वहाँ पे बाकी और 5,000 रुपये बच रहे हैं, तो लेट मी go there. So if the makeup is say 11,000, 12,000, then you take 3,500 as, मतलब इतना अमाउंट की कोई होने ना पाए. और जितना बड़ा ऑर्डर है like 30,000 का है, 40,000 का है, then you can take advance like 8,000 जितना. It depends. Percentage wise you can actually play around 20% to 25% is decent enough. My bride had keys on her neck. I tried to conceal, but could not cover properly. How to manage that? So, Priyanka, in that case, you're supposed to use the correct form of corrector. You are supposed to also use yellow correctors, and the ज़्यादा over correction करने से भी वो it just turns patchy. So you need to use a thick consistency concealer. A thick consistency concealer would always give you a better coverage. So anything which is as thick as Huda Beauty would help. और फिर ऊपर से थोड़ा सा हाइलाइटर कलर भी, मतलब थोड़ा लाइट कलर भी लगा दो ताकि वो, मतलब ग्रेडेशन पे आपको जाना है. पहले use a corrector, then use a concealer shade which is a 1 to 2 shades darker, and then use something which is a foundation color, and then use something which is a highlighter color which is lighter. So ऐसे gradation में जब आप जाते हो तो you slowly come to the natural color of the skin. How to mix eyeshadows for that ombre look? You're not supposed to mix eyeshadow, you're supposed to apply eyeshadow, blend, and then again add transition colors and blend. Blending say you actually create that ombre look. You're not supposed to mix colors. Which undertone, which under eye cream do you suggest? I personally love All About Eyes by Clinique. Yeah, Clinique is a wonderful brand when it comes to skincare. It's like one of my favorites and very, very effective. However, if you have budget constraints and you don't want to use something which is very, very expensive, then you can stick to brands like M Caffeine, Dot and Key, Innisfree, Minimalist. These are brands that are really showing good reviews in market now. Is yellow also cancel redness, and how does yellow also cancel redness? Extreme redness is actually cancelled using green corrector. Okay, yellow also does it, but it completely depends on the tone you're working on. ओके, कितना रेड है उस पर डिपेंड करता है, और कौन से टोन के ऊपर आप यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. इफ़ यू आर वर्किंग ऑन वेरी वेरी लाइटर स्किन टोन और उनके रेडनेस के ऊपर काम कर रहे हो तो आप ग्रीन कंसीलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो. इफ़ यू आर वर्किंग ऑन मीडियम स्किन टोन then you can use coral and more towards peach, and then to see how you want to balance the lighter color or the overall tone,
you can keep adding little bit of yellow corrector, but completely yellow corrector doesn't do justice. Yellow corrector would need some kind of a peachy tone on especially Indian skin tone. I lost. हम अगर फाउंडेशन ठीक हो तो उसमें क्या मिक्स करें? थिक हो तो आप फेस ऑयल या फिर एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो, एक ड्रॉप, और उसको मिक्स कर सकते हो टू रिड्यूस द कंसिस्टेंसी टू अ लिटिल मोर थिनर. Because of facial hair on upper lips, it looks black and gray. The makeup on that case, what should we do? You are supposed to ask them to get rid of their upper lips, the hair that they have. Like I mentioned, you can't really do anything about the hair. जो है वो है, उसका वो टेक्सचर है आपके स्किन के ऊपर. टेक्सचर कैन नॉट बी कवर्ड विथ मेकअप. हाउएवर यू फील ग्रे लगता है तो आप वहाँ पे ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर सकते हो, but still it will not give you like a very even texture there. You will have to ask her to remove the hair from that place. How to recognize eye shapes? How to recognize eye shapes? There are a lot of, if you want to really practice, there are a lot of ways you can do it. Google is the most helpful, helpful tool in a way, you can say, where you will keep seeing so many examples of different kind of eye shapes. आप जितना स्टडी करोगे, बिकॉज इज मोर ऑफ अ थ्योरी पार्ट, आप जितना स्टडी करोगे उसके ऊपर उतना आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे टू अंडरस्टैंड द शेप्स व्हेन इट कम्स टू आई शेप्स और फेस शेप्स एट्सेट्रा. It is more of theory, so it's just how you study more, and then you just try to, when you see that in real life, you connect with it. So आप then immediately, आप जब मेरी आँखों को अगर आपने देखा, बहुत पढ़ा कि हाँ, this is the eye shape of this particular celebrity. Celebrities are usually how they show examples of, right? So when you see real life, when you see people now, then you start connecting it with the thing that you've read on Google. That's how I started understanding eye shapes and face shapes. So that is a very good practice that you can also follow. कलर करेक्टर यूज करना जरूरी है. कलर करेक्टर कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर फॉर मी. मैं तो कलर करेक्टर यूज करना हमेशा जरूरी नहीं होता. कलर करेक्टर इज something which is only used when you need to really correct something. If you don't have that much of unevenness on your skin, then you can conveniently just skip that part. Like I don't use orange corrector at all. I just don't use any corrector unless my skin looks dull, या कई बार ऐसा होता है कि हम सोए नहीं अच्छे से तो अंडर आई एरिया डल सा लगने लगता है, शैडोज दिखने लगते हैं, तो तब यूज कर लो जब आपको ऐसा लग रहा है. बट व्हेन यू फील दैट योर स्किन लुक्स नाइस एंड हेल्दी एंड इट डज नॉट हैव टू मच टू कंसील और करेक्ट, देन अवॉइड यूजिंग अननेसेसरी प्रोडक्ट्स. फाइन. ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप लुक्स कैसे दे सकते हैं, प्रोडक्ट कैसे पता चले. Product. Rajeshwari, it's about the look. It's about the makeup look. Bridal makeup is more elaborated, accentuated makeup, more detailing. The products are also more premium. The finish that we look at is more premium. And for party makeup, you don't do so much of detailing. Party makeup is something you don't even get so much paid for, right? So the brand also can differ, the kind of coverage you're giving can differ, the kind of eye makeup you choose can differ, the kind of service on the whole you give also can differ. So it's about how much you're getting paid. I charge 10,000 for a party makeup. So I can't give her very basic service because my party makeup charges are also good enough. Then I have to do justice. So it's all
It just all boils down to the price that you're charging and how you're justifying that price. That's how you gauge, basically. Many times lips don't stay on lips much time. How to prep? So Muskan, if you feel that your lipstick doesn't stay, try to use liquid lip colors. Okay, and before you even use liquid lip colors, try to use a lip balm. Keep it on till the time you're doing your entire makeup, which means towards the start of your makeup is when you're supposed to add your lip prepping product, so that by the time you come to the lips, the product have done absolute justice to your lips and your lips look more plumped and hydrated. That's when you use a liquid lip color. It will always stay. If the bride or your client is not comfortable using a liquid lip color, you ask her what is the challenge that she faces and why she doesn't want to. When she says that no, always when I use it, it becomes very dry, it looks very dry, then you know you are supposed to prep it even more well. अब कितना भी ड्राई लिपस्टिक लिप कलर हो, अगर आपने अच्छे से ऑयल लगाया है, आपने अच्छे से कभी कभी हम लिप ऑयल भी लगाते हैं या फिर एसेंशियल ऑयल भी लगाते हैं. सो इफ यू डू दैट, हाँ अंदर. So whenever you do that, you know that अभी आप कोई भी लिप कलर लगा दो, वो ड्राई नहीं होगा क्योंकि आपने अच्छे से प्रेप किया है. And then you can convince her. Still, if she says no, then lip pencil, lip balm आपको लगाना ही है. लिप बाम लगा के आप जब पूरा टाइम रख दो, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ एक्सेस लिप बाम नहीं है, तो आप directly you start working on it. And if you feel that there is some excess lip balm, then you just take a tissue and just lightly pat or tell her to open her mouth lightly, not एकदम ज़्यादा, क्योंकि फिर वो पूरा ब्लॉट हो जाएगा और बिल्कुल भी हाइड्रेशन नहीं रहेगा लिप्स पे. लाइटली पैट करके एक्सेस निकाल दो और लिप पेंसिल से ओवरऑल लिप्स कर दो. आप यू नो यू काइंड ऑफ फिल. आपको डेफिनेशन तो देना ही है, बट ओवरऑल लिप्स पे भी आपको लिप पेंसिल लगाना है, उसके ऊपर आप लिपस्टिक लगाओगे. दैट हेल्प्स द लिपस्टिक टू स्टे फॉर लॉन्गर. ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप हो गया. ब्रॉन्जर्स, इल्यूमिनेटिंग स्ट्रोब क्रीम कब यूज़ करें? ब्रॉन्जर्स आप यूज़ करते हो इंस्टेड ऑफ a contour, like I mentioned earlier also. It's a substitute of a contour. And illuminating creams आप usually use करते हो before powdering your base, which means foundation के साथ mix करके भी लगा सकते हो. Foundation अगर लगा दिया है तो over your foundation, only on the high points of the face, you can use the strobe cream or any kind of illuminating cream or lotion, and then powder it. Then you use whatever powder products you want to use, like contour, powder blush, powder highlighter. वो सब आप बाद में use करते हो. Can we use two shades of foundation, different brands like PAC and Forever 52? Palak, it completely depends. If you have worked with two different foundations together and you've seen the result, and that you know कि ये दोनों foundation को मैंने जब mix किया था तो it did set well, आपको trial and error करना होगा, क्योंकि different foundations have different formula and not necessarily every formula will set well. Sometimes formulas separate, they don't gel well, and then it starts showing on the skin. Okay, so until unless you have tried and tested it couple of times and seen that the result is nice, you can choose to go with your brides also. Like you can choose to go ahead with the same procedure, but never ever try something new on the bride immediately unless you have seen, because formulas of MAC Studio Sculpt foundation and MAC Studio Fix foundation is different.
if you mix these two MAC foundations of different range, that time also it can just separate. It will not set well. It can. So brand मतलब different brands तो छोड़ो, आप same brand में different foundation भी कभी-कभी mix नहीं कर पाते. So it all depends on what you're doing and if you yourself tried and tested that. मैम आइज के ऊपर अपर लिड पे स्वेलिंग हो जाती है ऑनलाइन क्लासेस के साथ आई मेकअप से, तो क्या करें? इफेक्टिव आई क्रीम स्वेलिंग हो जाती है और रजनी आइडियली आपको स्वेलिंग होनी नहीं चाहिए. You need to get that checked with a doctor. Why is that happening? Because you might be allergic to any particular eye product or any particular color on the whole. So try to figure that out. कभी कभी product से ज़्यादा color भी allergies देता है. Like blue colors, कईयों के ऊपर blue colors और green color use करने या red color use करने पे swelling आती है. वो चाहे कोई भी brand का क्यों ना हो. So you need to get that checked, and if you are allergic to something, then you cannot do anything but refrain from using those products or refrain from using those colors. Effective eye cream, All About Eyes by Clinique is the most effective eye cream that I have ever encountered. कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है? काजल मैंने ये बता दिया है, आई होप आपने तभी ध्यान दिया होगा. मेकअप को वाटरप्रूफ कैसे बनाएं? मेकअप को वाटरप्रूफ बनाया नहीं जाता प्रियंका, मेकअप वाटरप्रूफ खरीदा जाता है. लाइक फाउंडेशन, कंसीलर, योर आईलाइनर, मस्कारा, ये सब आपको वाटरप्रूफ यूज करना है. दैट्स व्हेन यू कैन से दैट योर मेकअप इज वाटरप्रूफ. जो ब्राइड रेडी करनी होती है तो आईज के हिसाब से आईलाइनर की शेप कैसे सिलेक्ट करनी है, विंग लाइनर एटसेट्रा. मोर देन आईलाइनर का शेप, Ayan, you need to also understand that what look you guys are doing. Okay, if the look demands a nice and elongated winged eyeliner, then you can create it considering what shape of eye you have to work on. But sometimes just a minimalist eyeliner just does absolute justice to the whole eye makeup. Because कभी कभी बहुत ज़्यादा हमने अगर आई लाइनर के ऊपर फोकस कर दिया तो जितना सुंदर आपने आई शेडो ब्लेंडिंग की है या फिर आई शेडो के ऊपर जो कुछ भी काम किया है वो पूरा अटेंशन हट के just directly comes on the eyeliner. So you have to understand what is the look, what is the focus of the look, what kind of a end result you are looking at. You want to focus more on winged liner, then even if it is hooded eye that you're working on, you can still achieve a winged eyeliner using different steps or different method. So it's not the eye shape, but it's more about the look. If the look demands a winged eyeliner, जहाँ पे आपको tricky eye shapes पे भी wing लाना हो, तो वो आपको सीखना होगा कि कैसे करते हैं. Usually वो आप step liners जो होते हैं, step liner से सीखते हो, मतलब करते हो. Which means when you close your eyes, you will see like a step, but when you open and look straight, it is a nice winged eyeliner. Okay, so that is how you ideally choose that eyeliner. लगाना है, नहीं लगाना है, कैसा है. Okay. Why most of the foundations and concealers who claim to be transfer proof transfer onto our clothes and everywhere, even after setting it properly? Any trick to stop it? Okay, Bhakti, anything that is transfer proof is supposed to be your foundation or any cream product. Powder products are never transfer proof or waterproof. One thing that we need to understand.
सो आप अगर फाउंडेशन लगाते हो और वो ड्राई कर देते हो तो फिर वो ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन द मोमेंट यू पाउडर इट, the powder will transfer because powders cannot be waterproof, and that is what you actually see. So the trick that I can help you with here is, especially on your body, you can't do this on your face, but body पे अगर, क्योंकि कपड़े पे लगता है तो वो body ही है, face पे तो कोई कपड़ा आएगा नहीं. So what you can do is whenever you are applying any foundation, concealer, powder, सब कुछ करने के बाद spray it with your hairspray. Hairspray immediately makes the whole body makeup absolutely transfer proof. Even white shirt आप पहन सकते हो with a lot of makeup on your body if you nicely spray it with hairspray. That's the trick. Which waterproof foundations do you suggest, ma'am? See, waterproof foundations, there are lots. जितना आप premium range खरीदते हो ना, वो anyway water resistant और sweat resistant रहते हैं, और जितने sweat resistant और water resistant product आप use करोगे, premium brand का उतना ही वो strongly resist करते हैं. The more you go for drugstore brands, वो उतने strongly resist नहीं करते. So इसीलिए आप drugstore brand में specifically waterproof foundations खरीद सकते हो. But when you go more towards premium brand, then water resistant products or sweat resistant products also work absolutely well. My favorite foundations are Tarte, MAC, what is this word? Huda Beauty, even NARS for that matter, has very, very good foundation range. Okay, guys. अभी मैं फटाफट. Okay, we will not take more than these questions that are already there, because I have to now also show you something related to the primary and secondary color. ठीक है. सो इसके आगे प्लीज और कोई क्वेश्चंस मत डालना, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन आंसर करती रह जाऊंगी, वो वाला टॉपिक रह जाएगा, एंड वी विल हैव टू एंड द सेशन व्हेन वी आर ऑलमोस्ट एक्चुअली ओवर विद द टाइमिंग. ठीक है. सो व्हाट मेक्स, मैम व्हाट मेक अ ब्रांड इज गुड फॉर व्हाट? अच्छा, मैंने बता दिया. मस्कारा के लिए यू कैन यूज MAC mascaras. Try using Too Faced Better Than Sex mascara, BTS mascara. That's also very nice. I lost. हाँ, बिगनर के लिए क्रीमी कंटिन्यू यूज नहीं है कि पाउडर कॉन्टोर? बिगनर्स के लिए स्टार्ट विद पाउडर कॉन्टोर, बिकॉज क्रीम कॉन्टोर इज थोड़ा सा एडवांस, विच over time with a few more sessions that you do it together with the experts, you will understand how to do that, and then you can finally end up trying and practicing that. But starting में powder contour is safest. The brow styling gel, it just helps Vanshi to spike and keep the brow shape intact, and the whole brow makeup, it just keeps it more intact and styled the way you've done. So वो जैसे जेल बालों पे जेल लगा के कैसे रखते हैं, वैसे ब्राउ के बालों पे जेल लगा के रखते हैं, so that whatever you're doing, it doesn't move, it just stays there. Yes, also Is there yes, so sorry, I saw one small thing, because the session is only for 1.5 hours. So we are on a time crunch, guys. So if there is something that we haven't discussed, please go ahead and drop your question. Agar humne discussion, because I can see many repeated questions. Okay, so if we've not discussed anything today, then you can drop in your question. आज का कोटा पूरा हो गया. Priyanka says. Okay. Which eye cream powder? Mithul, I'm repeating the eye cream All About Eyes by Clinique. All About Eyes.
What is it? Is there any lip primer? What lip primer just works as a skin primer. So there is a concept of lip primer as well. There are different brands who've come up with. I'm not sure about many, but MAC definitely has a prep and prime lip. That's the product that they have as a lip primer, and I've used that, and it really is a great product. मेकअप किट में एले गर्ल का मीडियम बेज कंसीलर आया है, तो उसको कौन से अंडरटोन या स्किन टोन के लिए यूज़ कर सकते हैं? बेज मैंने देखा नहीं है वो कलर. लेट मी चेक इफ आई हैव इट अराउंड हियर. मीडियम बेज है. Let me just swatch this. Looks more like a cooler undertone though. और Riddhi, I would want you also to swatch that actually and see what do you feel. You also put in your take, क्योंकि हमने इस बारे में बहुत बात कर ली है, हमने इस बारे में बहुत सारा स्टडी किया है, आज भी हमने in detail डेप्थ में बात की है इस बारे में. Plus you also have attended your theory of makeup. So I would want you also to swatch the product and let me know before I come to some answer. Let me check if Riddhi has answered. Okay, Riddhi, I have my answer ready. I want you to first put your answer. So that's how we will understand कि आपको कितना समझ में आया है. If you get a ready-made answer like this, you might not understand it. मतलब आपको ready-made अगर answers मिलेंगे, तो आप अपना brain नहीं use करोगे उतना. इसलिए I want you to use it because I have a swatch over here. I can nicely gauge that. All right, what is the difference between makeup fixer and setting spray? There's no difference in between makeup fixer and a setting spray. Anything that sets or fixes your makeup, that's what the spray is all about. Which brand you told best? बता दिया. मैं आप अपने ब्राइडल मेकअप में स्टार्टिंग से एंड तक क्या क्या यूज़ करती हूँ बताएं. मैम आप अपने ब्राइडल शिवानी, दैट्स अ लॉट. वो मैं अब आपको नहीं बता पाऊँगी, बट एनी डू इट टुगेदर सेशन यू विल अटेंड, उनमें से आप अलग अलग एक्सपर्ट के साथ करने वाले हो और ब्राइडल लुक्स करने वाले हो, तो तभी आपको समझ में आ जाएगा कि एक ब्राइडल लुक में हम क्या क्या यूज़ करते हैं. इन केस आपके किसी एक सेशन में मैंने कोई ब्राइडल लुक आपको सिखाया, तब आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा. नहीं भी तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी हैव एनी Q&A which is related more to your makeup application doubts, I will take up that question. मैम अगर स्किन पे बहुत ज़्यादा ब्लैक पिगमेंटेशन तो क्या है, तो किससे ठीक करें? मेकअप वाइज त्रोई, it's only and only color correction. It's only and only color correction. It's the concealer and your powder. Okay, and now what next? Please come on. I think Riddhi replied to you. She says, I mean to say कि warmer skin tone के लिए use होगा, but I want to know कि इसको every skin tone में तो नहीं use कर सकते हैं ना? This actually is more towards
warmer undertone. You're right. आप दोनों मतलब this is not very warm. It has some neutral kind of a tone. So you can see someone who is very very yellow, आप उनके ऊपर नहीं use कर सकते. But other than that, you can use on peach undertone. You can use on neutral undertones as well. But very yellow, उनके ऊपर आप ये थोड़ा सा off जा सकता है. Aisha, do you think there are more questions? Because I think that was the last that I read. Okay, I think we are almost done, ma'am. अगर skin बहुत ज़्यादा black हो तो, ma'am, amount Tina has a including- question. What if What if someone has? ऐसे नहीं होता टीना. You will not see एक जगह yellow और एक जगह pink. That is not ideally. It's not in any ideal situation that you will see that. You will see anything in between yellow and pink, but एक जगह yellow है एक जगह pink है ऐसा आप नहीं देखो. I think pretty much all these questions are taken already. So Kajal is asking, ma'am, makeup को कैसे more than long lasting कर सकते हैं, like 12 hours? आप ऐसे आवर गारंटी ओनली ऐसे केस में दे सकते हो जब आपका फाउंडेशन ऐसा क्लेम करता है तो. बट you don't ideally have any product that will make your entire makeup stay for 12 hours. It's your foundation that claims, and makeup is more about your foundation, concealer, your base. Other than that, whatever you've done will definitely stay. Only lipstick might need some what do you say, some kind of a touch up, but yeah, there is nothing that you can make it long lasting. You need to buy foundations which are more 16-hour wear or 12-hour lasting. Wo foundation should claim that. Only then you can offer this to your clients. Okay. So I think we'll move forward to the quick thing of color wheel, primary and secondary. Let's mix. So I'm doing it in a very simpler way. I'm just taking red एक हाथ में और एक thumb में blue. Okay, and just mixing it. Let's see what. Okay, so you're supposed to use a little more of red. So that's the shade of, that's a shade of purple. Can you see that? Okay. Cool. 1 minute, guys. Okay, so that's the kind of a purple tone that you get by mixing. You can see that, red and blue. Now we will mix red and yellow. Let me just clear this and see what kind of a color are we getting. Okay,
So now I have removed the, let us do red and yellow, yellow and red. Okay, what is the color that we get? You're right, I'm getting orange color, but in order to get that right orange color, I'll need a little more of yellow. जिसके लिए I'm just trying to fetch my spatula. Yeah, that's how you get the orange color, right? The more, so it all depends on the proportion of the shades that you're choosing. Okay. See, when I'm just removing the color here, I can see orange. The more yellow you take, the more orange it looks. See, I'm now taking more yellow. The more orange it looks. So less red and more yellow. अब हम एक आखिरी try करेंगे, which is yellow and blue. Just remove that. That's my yellow and that's my blue. Okay. Oh my god, my favorite. This was so instant. What is this? हो गया green. Now again, depends आपको जितना bright green चाहिए उतना आप मतलब bright as in deep green चाहिए उतना आप blue ज़्यादा लोगे और जितना आपको lime green चाहिए उतना आप yellow ज़्यादा लोगे. ठीक है? So you can create different shades of green but using different kind, like different proportion of these two colors. Okay? See, it's actually that green that has come on the tissue. All right, with that, we come to the end of this session. I hope Awesome. color, yeah. Okay. Yes, okay. I hope all of you have understood the color wheel and the primary and secondary colors. Okay. And yes, thank you so much, Aisha, for conducting this amazing session and so for patiently listening to us and explaining us in detail. And thank you so much, members, for even joining in. Have a lovely, lovely weekend ahead. Okay, Rajni, by the way, that's for you. No, Mitul, that's for you. This is the lip palette and not the eyeshadow palette. It's there in the Air Black kit, which is why I chose to use that. And thank you so much, Yolanda. Thank you for joining us towards the end and ensuring that everything is on place. So thank you very much for your help. And thank you guys for being such a lovely audience. And thank you for asking such good, relevant questions, which clearly means that y'all are giving your 100% in the course. And I loved all the questions, and all the questions were relevant and very, very interesting questions. So good job on that. Keep it up with your attentiveness. And we definitely have more Q&A sessions where we can further take all the do it together kind of a questionnaire then. Okay.
Absolutely. Thank you, everyone. Have a lovely weekend ahead. Bye bye, everyone. See you. Bye bye.